In this video, again we will solve questions related to distance, time and speed. The first question is, Rohit travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. We have to find out here speed of bus and speed of train. So we assume here, let speed of bus, speed of train is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer per hour. Speed of train is x kilometer per hour and bus is y kilometer per hour. Here it is given that total distance is 300 kilometer from her home. Now in first condition, it is given that if she travels 60 km by train, so distance traveled by train, is equal to 60 km. So remaining by what? Bus. So distance traveled by bus is equal to 300 minus 60, that is 240 kilometers. In this journey, she takes what? 4 hours. So total timing is what? Total time taken is equal to 4 hours. Means time taken by train and time taken by bus. Time is what? Distance upon speed. So distance is 60 upon speed x plus 240 upon y is equal to 4. Secondly, it is given that if she travel 100 km by train, means in second condition distance traveled by train is equal to 100 km. So distance traveled by bus will be what? 300 minus 100, that is 200 km. And total time taken is what? 4 hours and 10 minutes. Because it is given in this question, she takes 10 minutes longer. ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 10 मिनट लेता है, हम कई बार ऐसा ले लेते हैं कि 10 मिनट्स लगा, लेकिन क्या लिखा है? 10 मिनट्स लोंगर, मीन्स 10 मिनट ज्यादा लगे. तो इसको हम अगर 4 आवर और इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो ये होगा 10 अपॉन 60. 1 या 0 कैंसिल, सो 6 4 जा 24 एंड प्लस 1 25 अपॉन 6 आवर. ठीक है, इसको हमने आवर में चेंज कर लिया. अब टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इज व्हाट? 100 अपॉन x, डिस्टेंस इज 100, स्पीड इज x, डिस्टेंस इज 200, स्पीड इज y इज इक्वल टू 25 by 6. दिस इज सेकंड इक्वेशन. नाउ these equations are not linear equations. First of all, we will reduce this equation to the linear equation by assuming 1 upon x. So let 1 upon x as a new variable p and 1 upon y as a new variable q. So what we have? 60p plus 240q is equal to 4. This will be the third equation. And 100p plus 200q is equal to 25 by 6 will be the fourth equation. Now simply if we multiply this by 6, this by 10 and this by 6, this by 10 then it is 600 and this by 6 then it is 600.
एंड देन वी विल एलिमिनेट दिस. सो क्या करना है, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 6 से. सो व्हाट वी डू, 10 into equation 3 minus 6 into equation 4. So it is 600p 2400q is equal to 40. इसको 6 से करेंगे तो ये होगा 600p प्लस 6 टू जा 1200q. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 25 कैंसिल. 15. So q is equal to 15 upon 1200. Okay. So it is 15 8 120 means 1 upon 80. So value of q is 1 upon 80. Now we will put this value in equation. Putting q is equal to 1 upon 80. In one of the equation, equation third. So what we have, 60p plus 240 into 1 upon 80 is equal to 4. Add 3 is 24. So we'll get 60p is equal to 4 minus 3, that is 1. p is equal to 1 upon 60. p की वैल्यू अपने पास 1 upon 60 आई क्योंकि 1 upon 80 आई. एक्चुअली 1 upon x is p and this p is what, 1 upon 60. So x is equal to what, 60, and 1 upon y is q and this q is what, 1 upon 80. So y is equal to 80. So the speed of x हमने क्या assume किया था, speed of train. Hence speed of train will be 60 kilometer per hour and that of bus will be 80 kilometer per hour. Next question, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. So the two things are here. Speed of rowing. So we assume here, let speed of rowing in still water is equal to x kilometer per hour and speed of current is equal to y kilometer per hour. Now in downstream, distance is what, it is given that 20 kilometers. In what time, 2 hours. 2 hours में 20 किलोमीटर ये ट्रेवल कर लेंगे. तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ रोइंग विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20 अपॉन 2. लेकिन डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय व्हाट, स्पीड ऑफ करंट. तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10. ये फर्स्ट रिलेशन बन जाएगा. ये भी पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसा है कि डाउन स्ट्रीम में जो है बोट की स्पीड में या रोइंग की स्पीड में जो है स्पीड ऑफ करंट ऐड हो जाएगा, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा. अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं. अप स्ट्रीम में जो है डिस्टेंस ट्रेवल, वो डिस्टेंस ट्रेवल गिवन है क्वेश्चन में 4 किलोमीटर्स एंड टाइमिंग है
2 hours। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ रोइंग, दिस इज स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम विल बी 4/2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये होगा x माइनस वाई, दैट इज 4/2 इज 2। तो दो इक्वेशंस आ गए, इनको हम इजीली जो है एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे बाय एडिंग दिस। Adding first and second, what we have, x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. Cancel, you will get 2x is equal to 12, x is equal to 6. Now putting x is equal to 6 in first equation. So putting x is equal to 6 in equation 1, you will get 6 plus y is equal to 10. Y is equal to 10 minus 6, so y is equal to 4. Means what we get, speed of rowing in still water is 6 km per hour and the speed of current is 4 km per hour. Hence speed of rowing in still water इज इक्वल टू वॉट, 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक्स अज्यूम किया था, और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट हमने वाई अज्यूम किया था, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो